Don't drag innocent friend. No alimony, no third party. Well, Suraj Nambiar finally shared post after split with Moni Roy. Well, जिस तरीके से फेक एलिगेशंस लग रहे थे, चाहे वो सूरज नाम्बियार पर हो, चाहे मोनी रॉय पर हो, जब से डिवोर्स की बात अनाउंस की है मोनी रॉय ने और सूरज नाम्बियार ने, अब दोनों की राहें अलग हो चुकी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने पब्लिकली भी अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी सूरज नाम्बियार पर कई फेक एलिगेशंस लगते रहे कि सूरज नाम्बियार ने जो है मोनी रॉय को धोखा दिया है। तो वहीं यहाँ पर मोनी रॉय पर भी एलिगेशंस लगे कि भाई वो दिशा पटानी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हैं। एक पोस्ट वायरल हुआ, हालांकि जो कि वो एक फेक पोस्ट था, ये हम सबको पता है। वेल, इसी के साथ आपको बता दें कि अब फाइनली सूरज नाम्बियार ने जो है रिएक्ट किया है, इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है और पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, रिसेंट बेसलेस रिपोर्ट सराउंडिंग अ सेपरेशन हैव बीन मेड इन अ बैड taste and absolutely malicious. Let me set the record straight once and for all. There is no alimony. There are no disputes. There is no third party involved. Moni and I choose to part way together with mutual respect and with full consideration for each other well-being. That is the truth. Everything else being reported is fiction and in some cases are deliberated attempt to verify two people who have done nothing but ask to be left alone. I want to state this clearly and finally, there is no truth to any of the claim being made about either of us or about any third party. Dragging other people into this is not cool, especially innocent friend who have nothing to do with this. Moni and I have both conducted ourselves with dignity through this period and we expect that same dignity to be extended to us by those reporting on it. Media houses have chosen to fabricate narratives that do not exist. These reports have been published without a share of verification, which is highly unfair. I am calling this out clearly and directly because staying silent in the face of the deliberate misinformation is not something I am willing to do. Our joint statement said everything that needed to be said. I request everyone to honor it and to allow both of us space to move forward in peace. Thank you. Well, इस तरीके से उन्होंने पोस्ट शेयर किया।